So starting from the maximum price. Look at question number 1. After a series of poor harvest, a government imposes an effective maximum price on cereal. What would be a consequence of this policy? अगर government जो है किसी भी good की poor harvest के बाद उस पे maximum price लगाएगी, what will be the result of this policy? Again, क्या होगा अगर आप maximum price लगाओगे? This is the demand. This is the supply. And this is your maximum price, which is below the equilibrium level. Both rich and poor people would satisfy their demands equally. B, illegal buying and selling through a black market would be prevented. C, rationing would be necessary to ensure a fair distribution of cereals. And D, the market would fail to clear, leaving a surplus. पहली बात ये maximum price में surplus नहीं होता, shortage होती है. ऑप्शन है देखो, both rich and poor people would satisfy their demands equally. This won't happen. ऐसा नहीं होगा कि अमीर और गरीब दोनों को equally अपनी डिमांड सेटिस्फाई करने का मौका मिल जाए, because rich people can afford more at higher price. अगर black markets होंगी भी तब भी they can buy more wheat. सही है. ऑप्शन बी क्या, illegal buying and selling through a black market would be prevented. No, it won't be prevented, it would be encouraged, क्योंकि गुड की शॉर्टेज हो गई है और शॉर्टेज की वजह से ब्लैक मार्केट्स इंकरेज होती है. आंसर होगा सी, rationing would be necessary to ensure fair distribution. गवर्नमेंट को राशन करना पड़ेगा गुड को, गवर्नमेंट को डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई किस बेसिस पे कितने यूनिट्स किसको देने हैं. सही है. तो द आंसर विल बी सी. Look at question number 3. A government has introduced an effective maximum price on rice. Which combination of changes must cause an existing shortage of rice to increase the most? कौन सा combination आपको बता रहे कि राइस की जो शॉर्टेज है वो सबसे ज्यादा इंक्रीज कर जाएगी? A fall in the maximum price and less price elastic supply. B क्या है? A fall in the maximum price and a more price elastic supply. C है a rise in the maximum price and less price elastic supply. And D, a rise in maximum price and more price elastic supply. सही है. तो जब भी आपको शॉर्टेज बढ़ेगी ना गुड की, तो होगा क्या, बेसिकली प्राइस करना चाहिए फॉल, नीचे आना चाहिए. सही है. मैक्सिमम प्राइस, if this was the supply and demand, पहले अगर आपने मैक्सिमम प्राइस यहाँ लगाया हुआ था P1 पे, तो मैक्सिमम प्राइस शुड गो डाउन ताकि शॉर्टेज इंक्रीज हो, क्वांटिटी सप्लाइड पीछे जाए. सही है. Q2 पे जाए Q1 से, और क्वांटिटी डिमांडेड आगे जाए Q3 से Q4 पे चली जाए. क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी, क्वांटिटी सप्लाइड कम होगी. इफ द मैक्सिमम प्राइस विल फॉल. सो C एंड D आर इनकरेक्ट. अब A और B में क्या है? A fall in the maximum price and less price elastic supply. A fall in the maximum price and a more price elastic supply. देखो एक सप्लाई कर्व हमारे पास ये वाला S0 और एक सप्लाई कर्व हम इनइलास्टिक वाला बना के देख लेते हैं, ये वाला. कौन से केस में आपकी शॉर्टेज ज्यादा हो रही है? Whether in the case of S0 or in the case of S1. The shortage is encouraged in the case of S0 when the supply is more elastic. जब प्रोड्यूसर आसानी से सप्लाई को रिड्यूस कर सकते हैं तब जाके आपकी सप्लाई ज्यादा फॉल बैक कर जाएगी. सो a fall in the maximum price and a more price elastic supply. The diagram shows a market subject to the maximum price. What will happen if the maximum price is removed? अगर maximum price remove हो जाएगा तो क्या होगा? If we remove the price, if we remove this maximum price, अगर हम इसको हटा दें तो मार्केट कहाँ चली जाएगी? अगेन इक्विलिब्रियम पे. P will be the price and Q will be the quantity. There will be allocation by the queuing system? No. There will be allocation by government rationing? No. There will be allocation because of प्राइस मैकेनिज्म. सही है. प्राइस सिस्टम से एलोकेट होगा. जो P नॉट ये वाला प्राइस पे कर सकेगा उसको क्वांटिटी मिल जाएगी, और जो प्रोड्यूसर बना सकता है एट दिस प्राइस सेल कर सकता है, दे विल बी प्रोड्यूसर. The government shows the demand and supply curve for a good. The government sets a maximum price of OJ
for the good, how will this affect the consumer and the producer of the good? किस तरह से आपके consumer and producers both will be affected? देखो पहले क्या था, पहले आपका की क्वांटिटी थी ये Q नॉट while the price was P नॉट. अब जब आपने मैक्सिमम प्राइस लगा दिया, the producers are supplying this quantity QS while the demand is QD. अब देखो QS जिन कंज्यूमर्स को मिल गई उनका तो हो गया फायदा, सही है, बिकॉज दे आर गेटिंग द गुड एट लोअर प्राइस, उनके लिए प्राइस भी कम है और क्वांटिटी भी ज्यादा हो गई. सो सम कंज्यूमर्स विल गेन, ऑब्वियसली दोस कंज्यूमर्स हु विल बी गेटिंग दिस क्वांटिटी विल गेन एंड सम विल लूज आउट. सही है, ये क्योंकि जाहिर है क्वांटिटी कम हो रही है, तो कुछ ऐसे कंज्यूमर्स भी होंगे who will lose out on the good. सही है, so some consumers will gain, some will lose out. What will happen to the producers? का नुकसान हो जाएगा for sure. सही है, क्योंकि वे producers पहले price P not charge कर रहे थे, now they are charging price J and they are producing quantity QS rather than quantity Q. सही है, so the producers will lose out. The answer should be D. Good job, all of you get D. Look at this. The diagram shows the market demand and supply curves for rice. What would happen if the government imposed a maximum price of $10? अब अगर government ने maximum price लगा दिया $10 का, so what will happen? The government would need to supply quantity Q1, Q3. The quantity sold would be Q1. The quantity sold would be Q2. The quantity sold would increase from Q2 to Q3. देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे the government is imposing maximum price above equilibrium. So this maximum price is not effective. This is ineffective maximum price. And when it is ineffective, obviously the market will be at equilibrium. Price होगा $8, quantity होगी Q2. So the quantity sold would be Q2. So always remember, maximum price above the equilibrium is ineffective. A government fixes a maximum price for a product in order to increase its consumption. What would be the likely outcome of such a policy? अगर government maximum price लगाती है, what will be the outcome of such a policy? Consumption will fall if the maximum price is above the equilibrium. Maximum price above the equilibrium तो होगा ही नहीं, सही है, because it will be ineffective, so it won't affect the consumption. Consumption will rise if the maximum price is below the current equilibrium. Consumption increase भी नहीं कर सकती. क्यों नहीं increase कर सकती? Because producers will be reducing the quantity traded. If the maximum price is imposed, वो quantity traded कम कर देंगे, so ये भी नहीं होगा. Production will fall if the maximum price is above the current equilibrium. Again, ये तो ineffective है. Option answer correct is D. Yeah. Production will fall if the maximum price is below the equilibrium. अगर आप below the equilibrium maximum price लगाते हो, producers will discourage. सही है, it will be they will reduce their quantity and production will fall. The diagram shows the demand and supply curves for a good. The government fixes the maximum price of OP1. Again, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, दोबारा government maximum price कहाँ लेके जा रही है? Above the equilibrium. What would happen? अब क्या हो जाएगा? Yeah, the answer should be the market equilibrium quantity OQ would be demanded and supplied. आपकी market equilibrium यही रहेगा, equilibrium point पे OQ will be the quantity supplied and quantity demanded. The government places a maximum price P1 of an agricultural product. The supply and demand conditions for this product are shown in the diagram. Again, यहाँ पे दोबारा वही हो रहा है, maximum price above equilibrium. What will be the outcome? Equilibrium price and output. Yeah, good job. आपकी जो market equilibrium है वो यही रहेगा. The diagram illustrates the market for wheat. The government sets a maximum price again. OP1 ऊपर दोबारा equilibrium के ऊपर लेके तो फिर दोबारा ineffective हो जाएगा.
आप दोबारा से इक्विलिब्रियम पर ही रहोगे. So what would cause the maximum price to have an impact? सही है. अब वो क्या बोल रहे हैं, इन्होंने यहाँ मैक्सिमम प्राइस लगाया P1 पे, अभी ये है इनइफेक्टिव. सही है. नाउ दिस मैक्सिमम प्राइस इज इनइफेक्टिव राइट नाउ. वो बोल रहे हैं कि व्हाट वुड कॉज द मैक्सिमम प्राइस टू हैव एन इम्पैक्ट ऑन द मार्केट. मार्केट में इम्पैक्ट आ जाए, मतलब ये मैक्सिमम प्राइस इफेक्टिव हो जाए. एन इंक्रीज हार्वेस्ट ऑफ व्हीट. अगर व्हीट की हार्वेस्ट बढ़ती है, सप्लाई कब बढ़ जाएगा ना बेटा. सप्लाई कब बढ़ेगा. सही है. एंड अगर सप्लाई कर्व बढ़ता है, so let's say if the supply curve shifts out, again your maximum price is above the equilibrium. आपका maximum price equilibrium से ऊपर है, so this is a fall in the price of rice. अगर राइस का प्राइस फॉल करेगा दोबारा, फिर मैक्सिमम प्राइस अभी भी still it is above the सबसे सप्लाई कर्व शिफ्ट होगा. एंड इन एडवर्टाइजमेंट कैंपेन, अगर व्हीट की ब्रेड की एडवर्टाइजमेंट कैंपेन होती है, डिमांड कर्व विल प्रोबब्ली शिफ्ट आउट. तो डिमांड कर्व फिर आउटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा. और अगर यहाँ पे चला गया आपका डिमांड कर्व, लेट्स से एट दिस पॉइंट, सो नाउ दिस मैक्सिमम प्राइस विल बी इफेक्टिव, क्योंकि नाउ द डिमांड कर्व इज D1 एंड द सप्लाई कर्व इज S. सो विद D1 एंड S, दिस मैक्सिमम प्राइस इफेक्टिव. समझ में आई बात? यू गाइस गेट इट? एडवर्टाइजमेंट से डिमांड बढ़ती है हमजा. एडवर्टाइजमेंट से डिमांड बढ़ती है. आपकी से आपकी डिमांड कर्व विल शिफ्ट आउट. तो कहाँ जा रहा है? पढ़ लेना, क्लोज कर दें आप अपना. Now look at this question. The diagram shows the demand and supply curves for a good. If the government set maximum price of OPM, what will be the quantity bought by the consumer and the quantity produced by the producer? Again, maximum price above the equilibrium लग रहा है भाई. तो क्या होगा? It will be ineffective. Say now this maximum price will be ineffective again. So what will be the quantity bought and sold? OY, because this will be your equilibrium quantity. तो लास्ट वीडियो करवाएंगे अभी आप? हाँ. अच्छा, you look at this question. In moving towards a market economy, government price controls were removed. In the diagram below, the government initially set an effective maximum price. What effect was there on the price and quantity when the government removed the maximum price? Government ने जब maximum price को remove किया तो क्या effect आएगा? देखो पहली बात क्या है कि इफेक्टिव है मैक्सिमम प्राइस. सही है. effective maximum price, which means that the maximum price was below the equilibrium, so it should be $6. So if the government removes this thing, the equilibrium price will increase from 6 to 8, from 6 to 8, from 6 to 8, and this will remove the shortage of the good, because maximum price where there is a shortage, this is your quantity supplied and this is the quantity demanded. So this shortage will be overcome and we will be in the new equilibrium market. Now look at question number 1. In the initial quantity traded was Q and the price was P. So initial quantity ये थी और price था P. The price then rose to P1 and the quantity traded to Q1. Now this is your market equilibrium. Which combination of the government policy measure could explain this change? सही. अब गवर्नमेंट पॉलिसी मेजर जो आपका ये चेंज बता रहा है. सही. पहली चीज देखो क्या थी, जब आपका प्राइस था P and the quantity was Q, इसका मतलब था कि यहाँ पे मैक्सिमम प्राइस लगा हुआ था. सही. This was your P max where the quantity supplied was Q. सही. So if the government removes the maximum price, फिर आपकी मार्केट इक्विलिब्रियम पे चली जाएगी. वो
यहाँ जानी चाहिए इस वाले पॉइंट पे, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, सही है, बट इट इज नाउ गोइंग टू पॉइंट सी, विच मीन्स कि सप्लाई जो है वो आपकी प्रोडक्ट की फॉल कर रही है, सही है। रिमूवल ऑफ अ मैक्सिमम प्राइस एंड रिमूवल ऑफ द सब्सिडी ऑन द प्रोड्यूसर, ये होना चाहिए। आप मैक्सिमम प्राइस भी हटा रहे हो और सब्सिडी भी हटा रहे हो, जिसकी वजह से सप्लाई का पीछे चल जाएगा। रिमूवल ऑफ द मैक्सिमम प्राइस एंड इनकम टैक्स की इम्पोजिशन से बेटा आपकी डिमांड चेंज होती है, इनडायरेक्ट टैक्स की इम्पोजिशन से आपकी सप्लाई चेंज होती है। इनकम टैक्सेस आर डायरेक्ट टैक्स डायरेक्टली डिडक्टेड फ्रॉम द कंज्यूमर्स, सही है, सो दैट इज व्हाई ए इज इनकरेक्ट। सी क्यों इनकरेक्ट है? रिमूवल ऑफ द मिनिमम प्राइस था ही नहीं, सही है, so the answer is B. Look at this question. The diagram shows the market for sugar, which is in equilibrium at the price OP. A government then fixes the maximum price of OP1. Government ने maximum price fix कर दिया OP1 पे. What will happen as a result? Now what will happen if the government fixes the maximum price of OP1? An increase in consumer surplus equal to PRUP1. देखो consumer surplus पहले क्या था? पहले था आपका ये सारा area. All of this shaded area was your consumer surplus. Now the consumer surplus will be consumer surplus increase होगा इस एरिया से, PQS P1 से increase होगा and it will also go down by this area, सही है। ये वाला जो ट्राइंगल है ये फॉल कर रहा है आपके कंज्यूमर सरप्लस को, so this is incorrect. A reduction in expenditure by people who still buy sugar equals to PQS P1. अच्छा जी, अब अगर आपने एक्सपेंडिचर देखना है तो एक्सपेंडिचर कैसे निकलेगा? प्राइस टाइम्स क्वांटिटी से। पहले क्या था एक्सपेंडिचर? पहले था एक्सपेंडिचर ये this whole square was the expenditure. Now those people who are still buying the sugar, sorry guys, so ये जो a reduction in the expenditure by the people who still buy the sugar, जो लोग अभी भी चीनी खरीद रहे हैं उनकी क्वांटिटी ये है, सही है। अब वो क्या कर रहे हैं? वो पहले खरीदते इस प्राइस पे इतनी क्वांटिटी, now they are buying at this, so ये जो सारा green area है, the one shaded with green is the reduction in the expenditure by those people who are still buying the sugar, सही है। वो लोग हैं जो अभी भी शुगर खरीद रहे हैं, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? द आंसर वुड बी बी, सही है, the answer will be B. Moving forward, look at this question. The diagram shows the imposition of maximum price OM on the product. An organization buys up the total supply at the maximum price and then resell it illegally to gain maximum revenue. फिर कब उन्होंने क्या किया? उन्होंने maximum revenue के लिए उसको illegally sell करना शुरू कर दिया। So what is the organization's revenue? अब organization का revenue क्या होगा? देखो
ये था आपका मैक्सिमम प्राइस, और उन्होंने इतनी क्वांटिटी खरीद ली। सही, उन्होंने ये सारी क्वांटिटी एक्वायर तो कर ली, लेकिन इसको एक्वायर करने के बाद अब वो क्या कर रहे हैं, नाउ दे आर इलीगली सेलिंग इट। अगर वो मार्केट में सेल करते हैं, देखो जो आपके लोकल कंज्यूमर्स हैं who have the demand curve D, they are willing to pay price S इस क्वांटिटी के लिए, X क्वांटिटी के लिए they are willing to pay the price OS. So all of this area, ये जो सारा एरिया है, will be the revenue OS TX। ये सारा का सारा उस ऑर्गेनाइजेशन का रेवेन्यू हो जाएगा, प्राइस times the quantity. Say so it will be OSTX. This will be the revenue for all those people who will be selling it in the black market. The diagram shows the market for spectacles. Initially the market is at equilibrium price OP and the quantity is Q3. यहाँ है equilibrium पे. The government then sets both a maximum price of PX and a minimum price of PM. Government ने ये लगा दिया PMIN. This is your minimum price and this is the maximum price. What effect will these measures have on the market for spectacles? Both are ineffective. Yeah, good job. क्योंकि दोनों उल्टे लगाए हैं उन्होंने, minimum price को ऊपर लगाना चाहिए था, maximum को नीचे. So both will be ineffective, creating the equilibrium quantity and price unchanged. So leave the quantity bought and sold unchanged at Q3. The diagram shows the demand curve and the supply curves for a good. A government fixed a maximum price of OP1, ये तो similar वाला. Which area in the diagram represents the amount of consumer surplus that would occur if the market is in a market if a government enforced effective maximum price? So अगर government जो maximum price लगाती है, so what will be the area of consumer surplus? देखो, before maximum price, this whole area was your consumer surplus, area below the demand and above the market price. Now if the government imposes maximum price, अगर government जब effective maximum price लगाती है, तो ये quantity मिलेगी. Now this price P max, area below the demand curve, this is your consumer surplus. F, G and I only. This will be the new consumer surplus, which is F, G and I. So this will be option C. Now look at this last question. The diagram represents a market for a good in which the equilibrium price is OU. Equilibrium price is OU. A maximum price of OV is imposed by the law. What effect does this have on the consumer surplus? Consumer surplus पे क्या effect पड़ेगा अगर वो maximum price लगा दें OV का? It is not effective. Yeah. Why it won't be affected at all? Because the maximum price is ineffective. आपका जो maximum price जो आपने impose किया है वो अभी ineffective है. सही? So you look at this question of taxation. A specific tax is placed upon each bottle of perfume sold. In the diagram, SS is the supply curve before and ST is the supply curve after the tax. सही है भाई, ये tax के बाद का supply curve है. ST. This is your supply curve after tax. Which area represents the revenue received by the government? Government को कितना revenue मिलेगा? Which is price, वो government का tax. It is quantity, new quantity
मल्टीप्लाइड बाय पर यूनिट टैक्स, सही है। सो पर यूनिट टैक्स कितना आ रहा है, दिस डिफरेंस इज योर पर यूनिट टैक्स मल्टीप्लाइड बाय दिस क्वांटिटी, ये आपकी नई क्वांटिटी है ना ओवर, तो ये जो सारा एरिया है आर पी आर टी डब्ल्यू, दिस विल बी द government tax revenue as a result of tax. Which element of a tax and benefit system is regressive? कौन सा element जो है वो regressive है? Rent subsidies to tenants of publicly owned housing, specific tax on beer and tobacco, C the payment of child benefit to families, and D the taxation on capital. कौन सी regressive होते हैं taxes? Indirect taxes are regressive in nature. So here we have only one indirect tax, which is specific tax on beer and tobacco, which will be regressive. अगला देखो भाई, कंपैरेटिव एडवांटेज के मैं अभी करा रहा हूं उसके बाद। The diagram shows the demand and supply curves for a commodity before and after the specific tax is removed. सही, after the tax is removed, ये था, ये हो गया after tax, जब भी आपकी सप्लाई कर्व आगे शिफ्ट हो गया, सही है। What is the tax per unit of output and what is the price after the removal? देखो प्राइस तो आपको पता है रिमूवल के बाद ये हो गया नया प्राइस, दिस इज द इक्विलिब्रियम, $6 is your new equilibrium price, सही है। Price after the removal is 6. Now what is the amount of tax? Tax का amount कितना था भाई, जो आपका या सप्लाई कर्व का शिफ्ट आ रहा है, देख लो यहाँ से यहाँ तक कितना है, 12 minus 6 is again $6, so it should be 8. The supply of an imported good is shown by the curve S. What will be the new supply curve if an ad valorem percentage tariff is imposed? Ad valorem tariff से क्या होगा भाई, नॉन पैरेलल शिफ्ट होगा, सही है। So if this is your original supply curve, this is a parallel shift, the only backward non parallel shift is A, सही है, वो non parallel है, it is an example of ad valorem tax. The diagram illustrates the effect of placing a specific tax to JM on the good. सही, ये आपने specific tax लगा दिया. Which area represents the total tax receipt? Again बहुत ही आसान, कौन सा एरिया होगा भाई, this is your new quantity after the tax, तो ये सारा एरिया हो गया आपका टैक्स की रिसिप्ट जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू है, which is XJZM, ये वाला एरिया XJMZ is your total tax receipt. Look at this question. The table shows the demand and supply schedule for a good before and after the imposition of a tax. What is the amount of tax? Tax का amount क्या है, सही है। अब पहले आपने बताने, देखो टैक्स के अमाउंट के लिए पहले आप बताओ what is the original equilibrium, quantity supplied before tax और quantity demanded कहाँ equal आ रहे हैं, 340 ये यहाँ पे equal आ रहे हैं, सही है। ये आपका ओरिजिनल है, अगर मैं ये बनाऊं supply and demand, this will be 340 and this is $16. Now again अब 340 कहां पर इक्वल आएगा, here 19 पे, अगर मैंने सप्लाई कर्व को पीछे शिफ्ट किया S1 पे लेके चला, सही है।